घर है, हर एक घर की सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकबोन है वो एक फीमेल होती है, और फीमेल अपने आप को ही निग्लेक्शन पे रखे तो जब बैकबोन ही आपकी बेंड होने लगेगी तो पूरा घर कैसे अच्छे से चलेगा. सो वी आर हियर टू डिस्कस. कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? फर्स्ट वन. So we are here to discuss regarding those all problems and rest of the things here. So we are discussing well-being of a woman. Well-being of a woman, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम कुछ डिजीजेस के बारे में आज आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ डिजीज के बारे में आपको बताएंगे, जिसको हम आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट and with homeopathic drugs, how you can improvise them, how you can cure them. So may I have the next slide, please? 1 out of every 4, it's not on the slide, show more, I think. 1 in every 4 women, they are dissatisfied with their overall wellness. आज हर एक 4 में से एक फीमेल को कुछ ना कुछ इश्यू है, whether अगर वो एडोलेसेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, मिडिल एज ग्रुप है तो कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेटर एज ग्रुप है तो कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स चला ही जा रहा है, कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ दे आर हैविंग, यू नो. सो in this platform today we are going to discuss about the 3 basic main issues. Have the next slide, please. The main problems faced by the women. So they are PCOD or PCOS, thyroid disorders, and third, lastly, we are going to discuss about the menopause. Look, menopause is inevitable. Okay, ये तो हमको आना ही है. Menopause ऐसा नहीं है कि menopause हम कुछ medicines बताएंगे तो वो नहीं होगा. नहीं. At a certain age, you are going to get your menopause. But हम थायराइड और पीसीओडी जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम कैसे अच्छे से हम उनसे यू नो हाउ कैन वी गेट द क्योर, हम किस तरीके से उसको बैलेंस में लेके आ सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. एंड उसके अलावा हमें मेनोपॉजल एज ग्रुप के अंदर कैसे हम लोग जो मेनोपॉज रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मेनोपॉज रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफी सारे सिम्टम्स फीमेल फेस कर रही होती है. सो हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दोज ऑल सिम्टम्स. ओके, Avneet, is it on slideshow mode? No, I have not. There's some issue, Nikita. I think, is this okay? You can just go ahead. Okay. Yeah. So, first of all, we are going to discuss about what exactly is PCOD. तो PCOD क्या है, उसके symptoms क्या हैं, what kind of things एक फीमेल फेस करती है. आज देखा गया है 1 in every 5 women in India, she is suffering from PCOD. Polycystic ovarian disease एक hormonal imbalance है जो कि अब देखा गया है कि adolescents में भी फीमेल सफर कर रही होती हैं. इसके कई सारे सिम्टम्स हैं जो हम फ्यूचर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. तो आपको एक शॉर्ट मैं समझाऊं तो पीसीओ इट्स लाइक अ थीफ, एक चोर की तरह काम करता है. कैसे करता है? आपकी वो सबसे एसेंशियल चीज को चुरा लेता है. इट विल गिव यू अनवांटेड हेयर्स. आपको अपर लिप्स पे, चिन पे हेयर्स आएंगे, आपको हेयर फॉल होगा, एक्ने आएंगे, ओबेसिटी विल बी देयर. सो एक एक्सट्रैक्ट हम देखें तो क्या आएगा, एक्सट्रैक्ट हम निकालें तो एक वो थीफ की तरह आपकी ब्यूटी को आपसे लेके चला जाता है. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस एंड हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट? पीसीओडी या पीसीओएस है तो ये दोनों कैसे डिफरेंशिएटेड है? एक है पीसीओडी, दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज, एंड अनदर वन इज पीसीओएस, पॉलिसिस्ट ओवरी सिंड्रोम. पीसीओडी के अंदर बॉल्स आप समझे, सिस्ट आर फ्लूइड होते हैं, आप एक बॉल्स की तरह समझे. हमारी ओवरीज में कुछ बॉल्स हैं जो कि कुछ लेस क्वांटिटी में रहेंगे पीसीओडी के अंदर, और दिस इज अ रिवर्सिबल कंडीशन. ये इजीली ठीक हो जाता है, इसमें इतने इनफर्टिलिटी के इश्यूज नहीं आते हैं, एंड मोस्ट कॉमन एंड द माइनर कंडीशन. अब हम पीसीओएस पे चलें तो पीसीओएस इट इज पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. मोर देन 10 सिस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी ओवरीज में, तो इसका काउंट ज्यादा रहता है. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड लेटर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इससे रिलेटेड भी जो सिम्टम्स रहते हैं या इससे रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं.
पीसीओडी और पीसीओएस में प्रीवियस स्लाइड ओनली प्लीज। पीसीओडी एंड पीसीओएस के अंदर कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। पीसीओडी में females, they are having hirsutism, there will be thinning of hairs, darkness of the skin near the neck, armpits and groins, menstrual irregularities होती हैं, cycles irregular होती हैं, साथ ही साथ heavy bleeding होगी या severe obesity मिलता है and acne देखा गया है PCOS के अंदर। sometimes there is headache also, okay? तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आई थिंक यू शुड नीड टू कंसल्ट ईदर योर गायनेकोलॉजिस्ट और यू शुड नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियन। मे आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीसीओएस अगर होता है तो व्हाट आर द हेल्थ रिस्क ऑफ पीसीओएस? पीसीओएस के अंदर देखा गया है कि फर्दर स्टेज में एक फीमेल को कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि डायबिटीज, heart attack, depression, and in the later stages, it is seen that women with PCOS, they are at the higher risk of endometrial cancer. काफी एक अगेन हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है जिससे कई लेटर स्टेजेस में देखा गया है कि कैंसर की भी स्टेज आने लगती है। Can I have the next one? So this was about the PCOS, PCOD. In the future slides, we are going to discuss about how to take care of this thing. And right now, we are going to discuss about the thyroid. तो second हम जो disorder लेके हमारे साथ चले थे, again thyroid is a lifestyle disorder. आप medications पे आ जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है till your death you need to take the medicines. But with the help of homeopathic medicines, you can control your counts. You can get your thyroid level to the normal stage. How? We'll discuss this later on. Now, what are the exact causes of hypothyroidism? Thyroid gland, it is situated in the frontal area of your neck. हमारे neck के frontal zone में there is a gland, it's known as thyroid gland. Sometimes due to deficiency of iodine, sometimes वहाँ पे आपने hyperthyroidism के लिए ज़्यादा treatment ले लिया है, उसकी वजह से भी hypothyroidism हो सकता है. Due to any sort of infection also can occur. Thyroiditis, it can also occur due to thyroiditis. Sometimes it is present congenitally and due to some drugs like lithium, amiodarone, like these kind of drugs also causes hypothyroidism. Now, what are the causes of hyperthyroidism? Again, there is in thyroid, it is differentiated into many parts, and here we are going to discuss about hypo and hyperthyroidism. So in hyperthyroidism, what are the causes? Thyroid nodules, thyroiditis, postpartum thyroiditis, and either consumption of excess amount of iodine, and sometimes due to hypothyroidism medication, hyperthyroid occurs. Next slide, please. What exactly are the symptoms for hyper and hypothyroidism? We'll see that in hypothyroidism, there will be cold intolerance, weight बढ़ेगा, sweating आपको कम होगी, constipation मिलता है, depression and irritability मिलेगी. काफी बार देखा गया है कि बहुत irregular cycles हो जाते हैं, brittle nails are there, slow heart rate रहता है, muscle and joint pain मिलता है, and face पे swelling रहती है, there is puffiness on the face. अब hyper में क्या मिलता है? There is either weight loss or weight gain. शॉर्ट और लाइट पीरियड्स रहते हैं. along with that यहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा मिलती है, नेल थिकनिंग, फ्लेकिंग मिलती है, यहाँ पे नर्वसनेस एंड एंजाइटी मिलती है, हीट इंटॉलरेंस रहेगी, मसल वीकनेस रहेगी, डायरिया मिलता है, और यहाँ देखा गया है कि अंडर द आईलिड्स पफी बैग लाइक बल्जिंग इज देयर, स्वेलिंग इज देयर. एंड व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? It is seen that fatigue भी दोनों में मिलेगा, insomnia रहता है, and hair fall is also there in hypo as well as hyperthyroidism. In the future slides, we are going to discuss about what kind of a diet you can take and how you can, control your thyroid count naturally. In the meanwhile, थोड़ी देर में अभी Dr. Snehal भी आएंगी. She'll also let you know about what kind of yoga, how yoga, as we all know that fitness is the best fashion statement, what I mean and what I do follow also. So being fit is the best thing in this world. आपको क्या आसनास आपके लिए beneficial होंगे, आपको वो बहुत and they are very good for PCOS, for thyroid as well as menopausal age group के लिए. In the further slides and the coming time, Dr. Snehal बहुत अच्छे से उसे cover करने वाले हैं. Right now we are going to discuss about what kind of diet you should follow. थायराइड को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स हैं लोगों के मन में कि अगर आप आप मेडिसिन ले रहे हो तो यू शुड नॉट ईट दिस थिंग.
अगर आप ये चीज ले रहे हैं तो आपको ये नहीं खाना चाहिए. इट विल हैम्पर द एक्शन ऑफ द मेडिसिन, इट विल रिएक्ट ऑन योर बॉडी. बट एग्जैक्टली देखा जाए तो मेडिकल बुक्स के अंदर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. इधर यहाँ बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू शुड टेक, आपको क्या खाना चाहिए, व्हाट यू शुड हैव, व्हाट यू शुड इंक्लूड आपका डेली साइकिल में, आपको डेली रूटीन में आपको क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करना चाहिए. वी शुड लुक आफ्टर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको हेल्दी ईटिंग पे जाना चाहिए. हमने पैंडेमिक में एक चीज देखी है, हमको बहुत इजीली हम कॉज एन नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो हमारी रीच से किचन बड़ा पास आ गया है. प्रीवियसली वी वर वर्किंग इन आवर ऑफिसेस, तो वहां पर हमारे पास में इतना ईटेबल्स होता नहीं था. यहाँ क्या हो रहा है, ओके मीटिंग चल रही है, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ है एंड मंचिंग इज स्टार्टेड एंड ऑल. तो उससे क्या हो रहा है, यू आर गेनिंग वेट, n number of lifestyle disorders are occurring, right? तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, लाइक ये जो 4 और 5 o'clock का टाइम होता है, आप मॉर्निंग 10 to 5 का 10 to 8 का जॉब कर रहे हैं एंड आपको इस समय तक क्रेविंग्स होने लगती है, बट यू शुड डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू ईट. अगर आपको इस समय पे कई बार देखा गया है ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है, तो आपको क्रेविंग होती है दैट आई शुड गो एंड ईदर टेक अ पीस ऑफ चॉकलेट और समथिंग, ना थोड़ा सा खा लूंगी, कुछ नहीं होगा, मेरे को ठीक लगेगा. फाइन, आपको ठीक लगेगा, बट इज चॉकलेट गुड फॉर यू? इज दैट पर्टिकुलर थिंग, और यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्नैक्स, रेडी टू ईट थिंग्स कितना इजीली मार्केट में अवेलेबल है, सब आपको यूं ही मिल जाता है, प्रोसेस्ड फूड्स. एंड वो क्या करते हैं, वो सब आपके लिए अभी नहीं तो फ्यूचर में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कोई ना कोई रूप लेने के लिए बैठे हुए हैं. आपको क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग क्रेविंग राइट नाउ कि मुझे ना कुछ खाना है, लाइक समथिंग इन स्वीट और समथिंग, नो इश्यूज, टेक अ योगर्ट, उसमें हनी डालिए, आप बनाना उसमें डाल सकते हैं, आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा, आपको क्रेविंग नहीं होगी, इनफैक्ट आपको फुल प्रोटीन मिल जाता है. तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत बहुत एनर्जाइज लगता है. दीज डेज डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं हमको वेट भी मैनेज करने में, एज वेल एज हमारे को कैसे हमारी कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमको हो ही नहीं, कैसे हम प्रॉपरली हमारी बॉडी को मेंटेन रखें इस चीज के अंदर. प्रीवियस स्लाइड ओनली प्लीज. हमें इसमें व्हाट एल्स वी नीड टू इंक्लूड, सबसे पहले हमको ग्लूटेन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं हमको वो लेना चाहिए. अवॉइड इनटेक ऑफ शुगर, कैफीन एंड अल्कोहल. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, यू शुड टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज. अलॉन्ग विद दैट, रेगुलर स्लीप इज रिक्वायर्ड, एक्सरसाइज इज मस्ट, डाइट रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी एंड magnesium is very good for you. Try to avoid stress and reduce the exposure of environmental toxins. Next slide, please. Then menopause. So menopause is again, as previously I mentioned, that menopause is inevitable. ये तो आना ही है, पर हमें कैसे ये जितने symptoms आपके सामने दिख रहे हैं, कैसे ये सारे symptoms में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली मेनोपॉजल एज ग्रुप कब आपका निकल जाए, ये किस तरीके से होने वाला है, ये हम आज इस स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम प्लीज प्रीवियस स्लाइड ओनली. क्या क्या इसमें होता है, आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहे हैं एंड काफी सारे इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं. कई बार फीमेल्स इसको निग्लेक्ट करती हैं, so they are not aware, okay I am getting my menopause, okay I am going through this thing. अभी तक कई लोगों को पता ही नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज फिजिकल. सो फिजियोलॉजिकली व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स यू विल गेट एंगर इश्यूज, anxiety issues will be there, depression will be there, irritability will be there, dizziness, concentration, difficulty in concentration and fatigue, mood swings. These were all on the mental plane. अब physical level पे क्या क्या होता है, hot flushes होते हैं, night sweats होते हैं, reduced libido is there, weight gain होता है, urinary incontinence रहता है, vaginal dryness is there as well as bloating is there. Next slide please. नेचुरली मेनोपॉज को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस. सबसे पहले ना आपको यू शुड टेक होलसम डाइट. आपको डाइट अच्छे से फॉलो करना है, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है,
कोशिश करें, try to do pranayam, some breathing exercises, some meditation. So these all things will help कि आपको जो आपके hormonal imbalance उस time पे body में हो रहा होता है उससे cope up करने के लिए this thing will help. You can take either protein rich food, आप tofu को intake कर सकते हो, you can do par yoga, you can eat more and more of vitamins and minerals in your diet. Along with that, आप mind and body practices कर सकते हैं. Sometimes acupuncture is seen, like massage, aromatherapy, meditation. These all are very helpful in menopausal age group. Next slide, please. Now we are going to here discuss about that integrated cure with homeopathy. Why to choose homeopathy? क्यों चाहिए homeopathy medicines? क्यों हम लेने वाले हैं? Next slide, please. Actually, homeopathy है क्या? If you are coming to me, then I'm not going to discuss about what symptoms you are having. Obviously, I'm going to listen about your symptoms, but a homeopathic doctor treats you as a whole. आपको पर्सन एज अ होल आपके पूरे सिम्टम्स लेगा, ना कि आपके एक एक सिम्टम्स के ऊपर ट्रीटमेंट देके आपको सप्रेशन की तरफ लेके जाएगा. It is a treatment for a disease by minute doses of natural substances, and no matter how many symptoms are experienced, only one remedy is enough to all those. Why to choose homeopathy? Because it is the second most widely used system of medicine in the world, as it is natural, safe, and have no side effects. Usage, as per देखें तो it is irrespective of gender, age, and even pregnant women, infants. If accidentally incorrect medicine is chosen, it will not harm to the person at all. It is quite affordable. Homeopathy homeopathy is a holistic treatment of approach. Next slide, please. And again, why to choose homeopathy? So because homeopathic medicines are really highly effective, they are safe, they are easy to take, they promote natural healing, and as we know that Naturefit deals with how we can treat you naturally. So it promotes natural healing. Along with that, it's having long-lasting effects. No side effects are there. Homeopathic medicines के कुछ benefits भी हैं, like increased strength and stamina will be there. Overall well-being will be improved. Clear mind and calm emotions. Organ functions will be improved. Wake up more refreshed, be more mentally alert, and increased vitality. So यहाँ पर हमने ये discuss किया that how we are going to treat any sort of lifestyle disorders with diet and with the homeopathic medicine. Now in the future slides, Dr. Snehal will come and she'll take the over. First of all, over to you, Avneet, and thank you so much for giving me the opportunity. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Nikita, for sharing with us the wonders of homeopathy and natural healing. And before we move to Dr. Snehal and look at the marvels of yoga, I would like to ask Sarah, who is a 19-year-old, young person and who has faced PCOS, and she would like to share with us her story. We would also take up stories from other people who would like to share after the session. Yeah, so over to you, Sarah. Just share your PCOS story with us. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Sarah here. I got to know about my PCOS in 2018. I was getting my irregular cycle, so doctor suggested me to go on some tests like sonography, thyroid, and hormonal tests, in which I get to know about that I'm suffering from PCOS, which I started my treatment with gynecologist. She provided me some medicines. It cured me, but I was dependent on my medicines for my regular cycle. Then I had some of my friends suggested me to go with homeopathy, and it also the help of homeopathy, I got also cured my acne, hair fall problems, and also my cycle got regular with the help of homeopathy. It has proved me better and healthy. Hoping to be without medicines in near future. Thank you so much, Sarah. Thank you. You know, it's always good to hear from people that how natural healing and natural therapies help. Now, I would like to invite Dr. Snehal, who would share with us the marvels of yoga. And I myself am a very, a big beneficiary of this, yoga therapy. So, over to you, Dr. Snehal. Thank you so much, Avni. I'll be talking today about the holistic health. Okay, first of all,
all very congratulations and best wishes as a part of the Women's Day. I would like to congratulate and I would like to wish you the best health in future. Okay, so today I'll be just sharing my slide. I hope, can you see my slides? Okay, Not yet, Dr. Snehal. not yet. Okay. Now, can you see? Yeah, Okay. I can put it on. Yeah. Okay. So, happy Women's Day, all of you. And today I'll be talking about the holistic approach of the for the women particularly. Okay. Now, when we talk about the holistic approach, first of all, what comes to your mind is about the mind and body, right? So when we talk about the holistic approach, means going towards the nature along with the mind and body. So when you consider your mind and body, you consider that your mind is healthy or your body is healthy. That means everything is fit and fine in the life. But this is not all dimensions about the life. Your life consists of many other dimensions, like along with the mind, that is emotional dimension. You have social dimension, occupational dimensional, and the intellectual dimension also, which is really very very important. Suppose any one of dimension is imbalanced, okay, whatever may be there. Suppose you have physical dimension is imbalanced because of the diseases. Just now Dr. Nikita have explained you, like PCOD and the other diseases. Suppose any one of this is affecting you, along with this, what happens, your emotional health is also getting disturbed. It have effects on your occupational health as well, and also definitely it has effect on your emotional and the intellectual dimensions as well. Okay, so when you consider holistic well-being, you have to consider your well-being in considering all these dimensions together. So when you want to work for this, you need to work and consider approach which is taking care of all these dimensions together. Now let us see, particularly when we talk about the holistic well-being. So holistic well-being in general for everybody, but here I would like to talk about particularly feminine holistic well-being. What does it mean? This is really very important, because along with these six dimensions, woman has a typical innate nurturing quality, the quality of the compassion, along with these six dimensions, and that is getting or bringing out to be a complex biochemical model for a woman. And that is the reason, along with these qualities, when she is nurturing, when she is showing her innate qualities and performing along with these six dimensions in the life, definitely her जो complex biochemical model है, it has to be taken care. Okay, so when we see कि that is why always we say कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है. So ऐसा नहीं है कि we are just taking consideration as a psychological aspect. It is not only psychological aspect, but there is a complex hormonal structure within her, a complex connectivity of the different organs within her, which the hormones are basically connecting to each other. We need to understand and then apply the different dimensions of life together. Okay, then it will be really helpful. Now you will be observing that though this is the complex thing a woman is carrying and nurturing, and still she is growing up and taking out her skills very beautifully. Nowadays what is happening, you will observe that she is suffering from so many psychosomatic elements. Dr. Nikita just now explained you many of these diseases to you. Okay, so what is happening ki the incidence of these psychosomatic ailments are increasing. Basically, the what is the root cause or about everything. You consider PCOD, you consider thyroid,
you consider infertility, any of these issues, the basic problem is underlies behind the stress and the lifestyle. Okay, when we talk about the stress and the lifestyle, before going to the stress and the lifestyle modifications, I would like to emphasize कि ये जो psychosomatic elements है, these are really very much burning issue, and that is the reason we are taking into consideration, and we are talking about these issues in a detailed way. So when you see that first of all, very important thing is all these diseases like PCOD hai, infertility hai, thyroid disorders hai, all these diseases are increasing by 2/3 fold every 5 years. Isn't it really a serious problem? And every woman in the house has to take care about it. So the scientific study shows that PCOD is occurring one in every 5 women, like infertility one in every 8 couple. Okay, now if you consider, you go back 10 to 15 years, not much, also just 10 to 15 years, and observe, you will not find so infertility as a so much common problem. And nowadays what is happening, like everybody is one in 8 couples really, she's taking the some treatment for the infertility problems. And even I would say ki IUI and IVF, all these things are getting really becoming very common, which is really not good trend, and we need to work on it. Then comes the thyroid problems. So thyroid problems also are getting really very common, of course one in 8 women. But see to it that women are suffering 5 times more than the male. Okay, so what could be the reason behind this? So thyroid, even male are having the same functions as whatever thyroid is functioning. What are the even though male is suffering from the thyroid issues, the symptoms, signs, everything's are going to be same. Then what is the different things? So let us understand your physiology as a woman. What is happening? How your mind, how your organs, your body is connected. Just look at this, and then you can easily work on that. So as many of us, we are repeatedly telling you that stress and lifestyle are the reflections. They are showing reflections in your body in terms of many of the psychosomatic elements. So what happens when we talk about the stress? Okay, so when we talk about the stress, what happens? Basically, it happens, everything happens at your brain, your mind, your set of the thoughts, your emotions, your anxiety level, everything is happening at the mind level, right? Then what happens when it is happening at the mind level? Your imbalance start at the mind level, releasing some neurotransmitters in your brain, and these changes are getting reflected, producing a stress hormone, because these things have to be combat. It has to be it has to be taken control. So हमारी बॉडी फिर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है. वो कहाँ से रिलीज होता है? तो वो आपके at the location of the kidney वो रिलीज होता है. So isn't it amazing कि something is happening at your brain, and उसके लिए जो कंट्रोल पुलिस है वो हमारे किडनी के हाथ से आ रहा है. That means our each and every organ is connected with our mind, our activities, and whatever we are doing. In the same way, when the stress hormone is getting released at the brain, what is happening? There are some inputs at the brain, and for some ladies, this is getting reflected. जो भी hormonal imbalance है, जो भी inputs मिल रहे हैं brain को, हमारी master gland pituitary को, वो inputs हमारी ovary में जाते हैं, and then because of the hormonal imbalance, estrogen production and the other hormone production भी affect हो जाता है, जो कि ovary produce कर रही है. And that is why for some people ovaries are getting affected. Some people thyroid gland is getting affected, because again thyroid gland is getting controlled by your brain, your master gland pituitary, जो master बैठा है हमारे brain में, वो उसी को control कर रहा है. And other even the metabolism है, जैसे insulin resistance है, ये भी काफी हद तक हमारा stress hormone and हमारा brain basically इसको control कर रहा है. Okay, now let us see. It is very important to, now you understood
Like whatever Dr. Nikita has explained you, ki what are these diseases, what are the symptoms, you understood ki what is the severity of the symptoms, and now you understood ki what is the prevalence, uska gehrai kitni hai. So you have to take a call for this. For taking the call for this, we are talking here about the holistic balance. Why? Because this holistic approach is going to take you more towards the nature, right? When we talk about more towards the nature, first thing comes to our mind is food habits, right? First thing come to our mind is around about the food habits. Dr. Nikita has explained you how should be your food habits, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अरे खाने के लिए तो जीना है, राइट? तो हम लोग काफी बार थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा पीरियड के लिए, नहीं अभी मैं डाइट पे हूँ, वी फॉलो द थिंग्स एंड देन वी स्किप इट. सो फूड हैबिट्स का ये जो है खाने के लिए तो जीना है, इसको अदर पर्सपेक्टिव में आप लेना जब सीखेंगे, तब आपको काफी आसानी हो जाएगी एंड यू विल बी रियली गोइंग टुवर्ड्स द नेचर. ओके, जैसे कि जीने के लिए ही खाना है. ओके, now we'll talk about the stress management in short. So stress management, basically I told you ki whatever thoughts, emotions, intensified anger, all these things is basic cause of the cause of your stress. Okay, so cause of the stress is not the environment. Many times you put finger on some environment, some issues, some situation, but this is not the thing. It is you, not that situation. So again, yoga helps you to understand many of the dimensions, how to control your stress and how to take your habits in a good direction, including the food habits, for a long duration. Now here I'm going to explore about the yoga dimension. Now many of you must be practicing yoga as a part of your life, but I'm sure you are taking yoga only two main dimensions. जैसे कि योगा करना है मतलब आसना करना है and प्राणायाम practice करना है. But yoga is not only the two dimensions. There are so many five major dimensions in our body, and yoga is acting on each and every dimension. Like हम asanas practice करते हैं, different asanas हमारी physical body के लिए practice करते हैं. In the same way, we are practicing pranayam practice. So pranayam basically क्या है? It is not only the breathing practices, different types of breathing we are performing. ऐसा नहीं होता है. So pranayam is much more deeper layer. तो जैसे जैसे हम ये एक एक प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम रियली खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते जाते हैं, हमारे लाइफ में काफी डीपर लेवल तक जाते हैं. सो प्राणायाम बेसिकली क्या करता है कि इट इज टेकिंग यू योर कॉन्शियसनेस, इट इज ब्रीजिंग बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड योर माइंड. इट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस बिकॉज दिस प्राणा इज बेसिकली लाइफ फोर्स जिसके भरोसे हम बेसिकली जी रहे हैं. सो इसको प्रैक्टिस करना मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करना, खुद अवेयरनेस लाना है, एंड बाय दिस वे वी कैन रियली गिव गुड एफर्ट्स टू आवर हेल्थ. And then comes, yoga works in the mind also. While performing the asana, we bring about the mindfulness. ऐसा नहीं है कि जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो या फिर कोई भी, फॉर एग्जांपल you are doing some workout on a treadmill, तो सामने कुछ स्क्रीन चलती होती है या फिर आप गाना सुनते होते हैं एंड समथिंग एंड योर मोनोटोनस rhythmic activity is going on. But what is the unique feature of yoga is when you work, you bring an alignment within you. फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग एनी पार्श्व कोणासन आप कर रहे हैं, तो आपके बॉडी की अलाइनमेंट कैसे है, आपके नी जॉइंट का एंगल कौन सा है, आपका हिप जॉइंट कहाँ पर है, ये जब आप खुद के अंदर अलाइनमेंट लाते हैं उस टाइम पे यू ऑटोमेटिकली ब्रिंग एन माइंडफुलनेस विद इन यू विच काम्स डाउन वॉट एवर जो आपके माइंड में जो भी खिचड़ी चलती रहेगी उस सबको वो फुल स्टॉप लगाने में बहुत मदद करता है, right? And when all these thoughts are becoming reduced with the mindfulness, it is enlightening your intelligent layer within you. So many times what happens, we feel our mind and our intelligence are the same, but no, but they are different. So that is why yoga works at your intellectual layer as well. Okay, and the most important thing is Anandmay Kosh, which relates to your state of happiness. Human being का एक ये innate quality है, being happy all the time.
which we are not able to do all the time. Whatever is the situation, that is the problem. We are not able to stay happy all the time. So yoga teaches us to stay all the time happy, while you are deeper into the practices. Now let us see, this was all about, what ancient scientific scriptures, हमारे जो भी great yoga gurus है उन्होंने हमको क्या बताया है योगा के बारे में. And we are following, not only the Indians, worldwide इसको follow किया जा रहा है. Now let us see about the scientific approach क्या है, therapeutic scientific approach क्या है योगा का. Now when we talk about the therapeutic scientific approach of the yoga, many of the diseases, today I would like to talk about the female disorders majorly. So there are many research papers, research work has been done over these female issues. Like for an example, few of them important one I would like to talk about, that yoga practice for consistently for the 3 months is seen to be very effective in the three phases, like two phases of the menstrual cycle. जो हमारा ओव्यूलेशन तक का फेज होता है उसमें अलग हॉर्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज करती है. ओव्यूलेशन के बाद में जो होता है उसमें अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. सो ये दोनों फेजेस के हॉर्मोन्स में स्टडी किया गया है, एंड बोथ फेजेस में योगिक प्रैक्टिसेस सीम टू बी रियली वेरी इफेक्टिव. ओके, एंड देन योगा सीम टू बी वेरी इफेक्टिव इन मीनोपॉज में. अभी जैसे डॉक्टर निकिता ने एक्सप्लेन किया है कि हॉट फ्लशेस है, then many of the psychological issues also she has mentioned. So what happens while doing and working with this all panchakosha, which I explained just now, when you are working with all these panchakoshas, these symptoms, yoga helps to reduce these symptoms in case of the menopause as well. Okay, now this is the scientific study I would like to talk about. This is my own scientific study, where we have taken a group of women who are doing yoga practices for 3 months, and one group they are taking only the conventional medicine. Okay, we have studied this for the 3 months. So we have taken the subjects, that is the patients of PCOD and the patients of infertility in this study. And when we have given the yoga for 3 months consistently, 3 days yoga for 3 months, 3 days a week yoga for 3 months consistently, what we have found, before also we have taken some investigations, and after also we have taken, so what we found is there is significant reduction in the stress and anxiety. Now you might have experienced, or your closed one, कि जैसे ही वो infertility के treatment लेते हैं, they are undergoing a lot of stress and anxiety because of the treatment only. It's not about your working issue, it's not about your family issue. बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी इसी का होता है. सो योगा एक्चुअली वर्क्स टू रिड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी हियर. एंड देन वी हैव सीन आल्सो वेरी इफेक्टिव इन द ब्लड लॉस असेसमेंट. जैसे किसी को ब्लीडिंग बहुत हेवी होता है एंड किसी को बहुत कम होता है. इट डिपेंड्स अपॉन आपके कौन से हार्मोन लेवल ज्यादा है एंड कौन से हार्मोन लेवल कम है. जैसे कि इस्ट्रोजन एंड लैक्टोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिसाइड कि आपके ब्लड लॉस कैसे होने वाला है. सो योगा, डिफरेंट योगा पोस्चर्स हैव सीन टू बी लाइक, जैसे इन्वर्टेड पोस्चर है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग है, इसमें डेफिनेटली इट अफेक्ट्स ऑन योर यूटेराइन लाइनिंग आल्सो. Okay, now this was all about what in general, like what is the scientific approach and all. Now I would like to quote some few important asanas which are beneficial for the PCOD problem, your infertility problem, and even the thyroid problems. Okay, so I have mentioned here few asanas like Hanumanasana hai, Natarajasana hai, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, अधोमुख श्वानासन, सर्वांगासन. सो ये आसनास तो इम्पोर्टेंट है. See, you cannot, this is not, the asana is not a prescription कि हाँ ये asana कर लो and you'll get benefited. What is important over here is when you perform the one particular sequence का भी एक बहुत importance होता है. When you perform your asanas in a particular sequence, your even the deeper muscles in your body, your organs, deeper organs get rejuvenated.
ओके उनका ऑर्गन्स का अपना अपना पोटेंशियल एक होता है, वो सभी ऑर्गन्स का इम्प्रूव होता है, एंड दैट इज व्हाई योगा इज सीन टू बी बेनिफिशियल। अभी हमने साइंटिफिक स्टडी में, जस्ट वुमेन के साइंटिफिक स्टडीज में देखा है कि हाउ इट इज गेटिंग बेनिफिशियल, प्रूविंग इट बेनिफिशियल टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स। Okay, now I will be talking about the pranayam. Okay, now when we talk about the pranayam, first of all understand pranayam is not just the way कि कपाल भाती कर लिया कि आपको पेट स्ट्रोक्स देने हैं, कपाल भाती करना है, नाड़ी शुद्धि is performing the नासिका मुद्रा and little different, यही नहीं है। So you have to be make a consciousness कि प्राणायाम एक ब्रिज होता है हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड माइंड को कनेक्ट करने में। सो व्हाइल डूइंग ईच एंड एवरी टाइप, you have, when you are doing in a perfect way, correct way, it is really connecting you, as well as it is signaling your pituitary master gland to help to settle these hormonal imbalance within you. Okay, so first one is Kapalbhati. You know, Kapalbhati is also very effective for those who are overweight. ओके, फॉर दी वेट गेन इश्यूज के लिए कपालभाति बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। देन सेकेंडली कम्स दी नाड़ी शुद्धि। सो नाड़ी शुद्धि इज बेसिकली बैलेंसिंग प्राणायाम। तो जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम करना मतलब हमारा जो प्राणा है, जो लाइफ फोर्स है, उसको हमको कंट्रोल में रखना है। सो नाड़ी शुद्धि इज बेसिकली टू बैलेंस दिस फोर्सेस विद इन अस। एंड देन लास्ट कम भ्रामरी। जैसे आपको पता है कि भ्रामरी आपने काफी बार सुना है, इट इज दी हमिंग साउंड which you produce and it is getting stimulated, your brain is getting stimulated because of this bhramari. So when your brain is getting stimulated, your pituitary gland is getting stimulated, is becoming more and more calm, and that way it is helping you to balance your hormones within your body. So this was all about the yoga in short. I have elaborated yoga, how yoga can help you. So what is important here कि ऐसा ही नहीं है कि आप just इसको सुनेंगे, start implementing, because if I ask you how many of you are really practicing and giving at least of 3 or 4 days a week, so I will definitely say कि बहुत कम लोग हैं जो इसको practice करते हैं. So regularly, if you want to really combat your issues with the help of the holistic approach, which is more close to the nature, then definitely you should start implementing about it. So that's all. I will stop my talk over here. And thank you, Naturefit, for providing such a nice platform, which is more close to the nature. And over to you, Avni. Thank you. Thank you so much, Dr. Snehal. It was a wonderful, insights to different aspects of yoga. Now, the last part, which will be the main takeaway for this session, besides what we all have seen, is how can we start implementing this? So, what I feel, or what I actually implemented for myself is, we have understood in this entire session that there is homeopathy, there are lifestyle changes, there are diet changes, there is yoga, there is a lot of things which we require to do if we want to heal in a natural and in a phase-wise manner for our current illness. So what I feel is we can compartmentalize, and what we tell you is the takeaway is a 3-level healing pyramid. कि आपने जो भी हमने आज डिस्कस किया, the doctors have shared their knowledge, how can I start? मतलब I am doing X and suddenly मैं Y कैसे कर सकता हूँ? So we suggest that divide these things into 3 parts. L1 would be something which I can just start immediately tomorrow. Maybe I can change my sleep time, my wake up time, meal time by some number of hours. So some changes, you need to figure out what you are doing wrong and what you can do immediately.
Similarly, something which you think, okay, you are convinced that yoga can benefit, so you are you start looking for a yoga teacher or some person who can really help you, guide you in the right way, and it might take a month for you to start that. And L3 would be something like, I am a smoker, or I am doing things which will not immediately, I cannot, and it will take me a little more longer time to do. This is what I feel we can take away from this session, that yes, there are some things which we need to do in a better way, in a right way, and let us structure it for ourselves, and this is unique for everybody. Now, what is Naturefit? So Naturefit is the first ever mobile app for preventive health and natural healing. What we have done is we have got all doctors, practitioners who can heal you naturally from the entire country onto this platform, and the access that you get is just a click away. So if you, after this session, are convinced with the miracles of homeopathy or yoga, you can consult Dr. Nikita, you can consult Dr. Snehal on this platform, and many more doctors who are nearby you. Also, we provide a lot of the Ayurvedic, organic, and natural products. So I think there is a possibility of changing also what we are putting inside and move towards a bit more natural. And we have a lot of health tools and free tools for everybody to start with. So how we suggest you can use the platform: the first thing is, you know yourself, what is your current state of health. By using the BMI calculator, the fat calculator, we have a Prakriti analysis tool which can tell you your dosha. Like homeopathy does a case record and a case analysis, there is Ayurveda which tells you your dosha, and on the basis of that, there are a lot of changes you can immediately make in your lifestyle. So first, just understand that, then see where you can improve, if at all there is some possibility, and how much is the deviation with the ideal parameter. What is the ideal BMI, मेरा क्या है, what is the ideal fat percentage, मेरा क्या है, and see कि मैं कैसे उस चीज को थोड़ा वो गैप को कम कर सकता हूँ. And step 3, as I suggested, कि अगर आपको लगता है कि ये गैप बहुत ज्यादा है, you can consult a natural practitioners on the platform. You can move towards more natural products, and you can engage with like-minded individuals who already believe in the miracles of natural healing. So for all of you today, we have a first free consultation on the platform. So you can download the app or click on and go to our website. Take up the first free consultation of any practitioner. You can consult a dietitian, you could consult a homeopathy doctor, whatever fits you. You could consult a psychologist, because as we understood, mind is one of the root causes of all of the ailments we have. So we have that for you. And there is something for everybody on the platforms. As I just said, tools and trackers, Fitbook. Fitbook is a community platform where you can engage with like-minded people. You can share, you can motivate, you can take challenges, shop everything natural, and heal in a natural way. With this, I would like to thank you all for joining in, and now we are open for questions. You could please type in your questions for the doctors or in the chat, and we would be happy to take it. Anyone has any questions, then we can unmute you accordingly. You can raise your hand, you can type any question in the chat. I think not many questions. Okay, there is a question from Sapna. For PCOD, any particular food to be taken? Dr. Snehal or Dr. Nikita, would you like to share any specific food? Yeah, Dr. Nikita. Technology enables, but it's also a restriction at times. Yeah, please go ahead, Dr. Nikita. Yeah. So Miss Aarti, right? Okay. Bilkul. There should be, for PCOD, what you should avoid, sugary stuff, because already आपने भी देखा होगा
these days if you are going to an allopathic doctor, तो आपको वहाँ पे they give you 21 days pills as well as they give you metformin. So what metformin actually does, आपका जो sugar level है उसको वो balance में लेके आती है. आपको पहले ही अपनी बॉडी में जो शुगरी स्टफ है उसको थोड़ा सा आपको हटाना चाहिए. ट्राई टू ईट एज मच एज फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स यू कैन हैव. आपको जितना हो सके होम बेस्ड फ्रूट्स जो है ये लेना चाहिए. यू शुड इंक्लूड मिंट रिलेटेड स्टफ. मिंट से जो मिंट की जो फैमिली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपको उसको अपने, यू कैन ऐड डिटॉक्स वाटर. ये सारी चीजें अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो पीसीओडी के लिए इट्स वेरी गुड. अलॉन्ग विद दैट होल व्हीट, आप मिक्स ग्रेन आटा यू कैन यूज एट योर प्लेस. तो मिक्स ग्रेन जो ब्रेड होती है, लाइक जो चपाती बनती है, इट्स वेरी गुड फॉर योर पीसीओडी ऑल्सो. We have another question. It says PCOD homeopathic remedies. Look, previously only I told that I can't deal not a single homeopathic doctor treats with the symptom of the disease. We treat as the person as a whole. Maybe if I am suffering from PCOD, then my medicine will be different. If Dr. Snehal is suffering, her medicine will be different. Okay, so I think better you should consult a homeopathic doctor, and on the basis of your symptom similarity, on the basis of your complete case taking, the medicine will get decided. Right. So I think there's another question. It said कि वो बोल रहे हैं कि PCOD is by birth and it will stay with me till I die. Is that really a fact? Is that what happens? How can it be by birth? Hormonal changes तो होते हैं adolescence age के अंदर है. You can't say it's by birth. Okay, this is a lifestyle disorder. आपका sedentary lifestyle की वजह से आपका जो आपकी proper living नहीं है, daily आजकल सब ना, not a single person, if अगर हम teenagers के पास जाएं, they are not ready to do exercise. सब के सब just couch potatoes हो गए हैं. They are sitting on their, just आपको Netflix दे दीजिए, आपको Prime दे दीजिए, आराम से सबने subscriptions ले लिए हैं. They are having their free time and they are continuously watching these all stuff. Not a single person is ready to go for a walk. Neither they are ready to go for workouts. Not they are having any control over their tongue. जैसा कि उन्होंने अभी डॉक्टर स्नेहल ने बहुत अच्छा एक सेंटेंस बोला था कि हम लोग ना खाने के लिए जी रहे हैं, हमें एक्चुअली जीने के लिए खाना चाहिए. सो दिस इज आपका ये की अगर आप बना लें तो ऑब्वियसली बात है सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आएंगे ही नहीं. और पीसीओडी भी ट्रीट किया जा सकता है बहुत अच्छे से थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन एज वेल एज थ्रू योगा. Right. I hope that answers. Then we have for irregular menstrual cycle, yoga will cure us as planning to conceive. So here I can share my own example that even when I was trying to conceive, I have fell back on yoga. I have particularly done yoga asanas for conceiving and it did help me. So, but I would like experts, Dr. Snehal, you can add here. Sorry, Dr. Snehal, I'm just unmuting you. Yeah. So first question is about which one first question will take? Just yoga will help for irregular menstrual cycle. Yoga definitely helps for the irregular menstrual cycles. The question is exactly कि योगा करने से cycles regular होते हैं क्या? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी हॉर्मोन्स, जैसे मैंने अभी बताया था, जो भी हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं, ओवरी रिलीज कर रही है जो साइकिल रेगुलर करने के लिए. जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग एक पर्टिकुलर थिकनेस में बनाने के लिए, जो कंसेप्शन के लिए, कंसीव होने के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है. अगर वो लाइनिंग उतनी थिकनेस में नहीं जाती है, देन कंसेप्शन में तभी भी प्रॉब्लम आते हैं. आपके हॉर्मोन्स रेगुलर हो सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है, बट एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो योगा क्या करता है बेसिकली, जब आप डिफरेंट सीक्वेंसेस में जब प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका थ्रू सर्कुलेशन, और ये जो हॉर्मोन्स है इसका ट्रैवल कैसे होता है, इट इज थ्रू योर ब्लड. ओके, सो जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ईच एंड एवरी ऑर्गन में बहुत अच्छा होता है.
plus other than blood there are signaling through your nerves which goes to the brain. तो definitely बहुत ही अच्छे results है आज तक। हमने काफी लोगों को, particularly मेरे यहाँ पे fertility issues and PCOD के लिए बहुत patients आते हैं and उनको बहुत अच्छे results है after practicing at least for 3 months of yoga। किसी को तो 1 or 2 months में ही आ जाते हैं। Okay, is your question solved exactly? I hope so. And I think there is somebody who wants to ask the question. Let me just. Okay, till then we can look at the other questions. Can ovulatory cycles be cured? Yeah, I will try. Yeah, this is really a very good question। अभी ओव्यूलेटरी साइकिल एंड अनओव्यूलेटरी साइकिल, जैसे अनओव्यूलेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, 80 to 90% अनओव्यूलेशन देखा गया है, ठीक है। बट जब आप बोल रहे हैं कि जो ओव्यूलेटरी साइकिल्स है इसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इट टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम टू वर्क ऑन इट, बट व्हेन यू गो विद द अल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक जैसे होम्योपैथी है, योगा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, डेफिनेटली इसमें देखे गए हैं। जस्ट द थिंग, जब ये जेनेटिक होता है तभी थोड़ी दिक्कत होती है, इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम, बट व्हेन इट इज डूइंग वर्किंग विद अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज इट रियली वर्क्स वेल। Yeah, Swati, do you have a question you can ask? I think I have unmuted you. You may want to ask a question. Okay, I think I did unmute her. Swati, okay, let me go ahead while I'm just handling this. I have thyroid menopause and now facing with anxiety. So, Dr. Okay, Snehal, yeah. you may. सी थायराइड एंड मीनोपॉज, ये दोनों भी चीज ऐसे है कि जिसमें हमारे वुमेन में, जैसे मैंने बताया था कि आपका हमारा फेमिनिज्म जो है, यूनिक क्वालिटीज, नर्चरिंग है, ये सब क्वालिटीज को कैरी ऑन करने के लिए हमारी बॉडी जस्ट जैसे हम टीनेज में आते हैं वहां से हमारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन ऐसे नहीं है कि इट इज उसका पर्पस डिफरेंट है, बट ये एस्ट्रोजन जो है ये आपके इमोशनल बैलेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे ही मेनोपॉज में आप आते हैं आपका एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप डाउन होते हैं एंड वो जो इमोशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी आपको अंदर अपनी फिजियोलॉजी प्रोवाइड कर रही है वो कम हो जाती है। एंड ऑल्सो व्हेन यू हैव थायराइड इट इज अफेक्टिंग योर, जैसे डॉक्टर निकिता ने बताया था कि काफी सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपका हार्ट अफेक्ट हो रहा है, पैल्पिटेशंस, काफी लोगों को पैल्पिटेशंस फील होते हैं, उसकी वजह से और भी डर लगता है कि ये क्या है, मुझे मेरी पैल्पिटेशंस फील हो रही है, मुझे कुछ तो हो रहा है, तो और भी डर लगता है। सो बेसिकली जब ये थायराइड एंड मेनोपॉज में जब ये एंजाइटी क्रिएट होती है एंड योर बॉडी इज नॉट, योर बॉडी फिजियोलॉजी इज नॉट सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, योगा वर्क्स इन ऑल दीज 3 लेवल्स। जैसे आप आसनास करते हैं, इनिशियली जब आप आसनास करते हैं तो आपका बिकॉज ऑफ एंजाइटी ध्यान नहीं होता है कि व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, आप उसमें मोनोटोनस हो जाते हो, हाँ ये करने के लिए बोला है वो करना है, दैट्स ऑल। फिर जैसे जैसे आप आसना के साथ में प्राणायाम करने लगते हैं, आसनास में काफी अलाइनमेंट लाने की कोशिश करते हैं, अपने आप माइंडफुलनेस क्रिएट होता है एंड विद द मेडिटेटिव टेक्निक्स ऑल्सो आपका जो माइंड है वो काम डाउन, एंजाइटी काम डाउन होती है एंड अननेसेसरी जो हॉर्मोन्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी की वजह से और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जब एंजाइटी बढ़ती है अगेन वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, अगेन वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, सो ये साइकिल चलते रहती है। तो इसके वजह से योगा बहुत ही अच्छा इसमें हेल्प करता है। Okay, I think we have many questions. Yeah. If I have regular cycles and follicular scan shows follicle grows but doesn't rupture, um, does any Yeah. but Yeah. would you like to take it? Yeah, so many times in PCOD this is the very common fertility issue कि follicles grow हो रहे हैं। So कुछ problems ऐसे होते हैं जिसमें follicles grow नहीं होते हैं। So follicles grow होने के लिए जो FSH करके hormone होता है, follicle stimulating hormone, वो काफी बार supplement किया जाता है in terms of medicines, और many times in terms of medicine वो supply किया जाता है, या फिर body खुद ही अच्छा तैयार कर रही है but it is not rupturing। ओके, रप्चर होने के लिए भी एक अलग हार्मोन सेंट होता है जो कि हमारे ब्रेन से है।
Okay, it is not from the ovary. वो जो रप्चर होने का हार्मोन है वो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, तो उसको जब गलत फीडबैक मिलते हैं तो वो नहीं कर पाता है। सो इसके वजह से जब जैसे ही आप अपने अंदर होलिस्टिक अप्रोच, आपकी लाइफस्टाइल है, आपका फूड हैबिट्स है, ये सब चेंज करने लगेंगे, डेफिनेटली ये बैलेंस आता है। इट टेक्स टाइम बट यू हैव टू वर्क होलिस्टिकली। कभी कभी आपको काफी बार ऑल्टरनेटिव सपोर्ट लेना पड़ता है, जैसे कि होम्योपैथी है। These medicines also help to gain this support along with this yoga and the holistic approach. So now I think the next question is, after getting regular cycles and with 2 years of healthy lifestyle, will it be a problem in conceiving at any age barrier is a issue? So ये जो एक myth है कि after a certain age we'll not be able to conceive. So does a healthy lifestyle and this help, and Yeah, or is age yeah. a issue? No, Yeah. I think एक लेमन लैंग्वेज में हम समझे तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सिमिलरली किसी के साथ में अर्ली मेनोपॉज आ जा रहा है, किसी को आजकल देख रहे हैं कॉज ऑफ दी सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली 28, 29, 30s में ही फीमेल्स को मेनोपॉज आ जा रहा है, एंड समटाइम्स नॉर्मली भी चल रहा है। कई मेरे पास ही पेशेंट्स आते हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड कंटिन्यूस, इतना स्ट्रेस है दीस डेज, सब कुछ बढ़ गया है, तो काफी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो जरूरी नहीं है कि अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज आ रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही होगा। एंड एज बैरियर इज दिस इज अ myth. If you are following a proper lifestyle, so in the later ages also you can conceive easily. Can we conceive in PCOD? Like if Yes, somebody has yes, PCOD? Okay. yes, definitely you can conceive in PCOD. Okay, so there is Kavita asks that about irregular cycle, 7 to 10 days. So is it normal, or if not, then how can this be 7 cured? to 8 days plus minus cycle is considered as normal. Whether it be a early cycle or a late one, it is considered as normal cycle. Yes, but if you are having 10 or 10 plus, like 8 plus days are there, so I think you should go for a proper medication and you should follow healthy regime and diet. Right. Okay, there are actually too many questions. Yeah. So, and all the people who are actually having these issues can, come and consult with Dr. Nikita, with Dr. Snehal on the platform. And as we have already told that there is a free consultation, so you could just start with giving it a try. अगर आप आज तक सिर्फ एलोपैथी पे ट्रस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस तो आप कर ही सकते हैं, बट यू कुड डेफिनेटली कनेक्ट विद द डॉक्टर्स. Can it help in, okay, like I am trying to unmute you, Swati. Somehow it is, I'm so sorry, I'm नहीं हो पा रहा है. आप question type कर सकते हैं क्या? Unexplained fertility, where egg quality issues are expected to be cause of infertility. I think mainly all the questions that have come, Dr. Nikita and Dr. Snehal, is around, conceiving, fertility issues, that whatever diseases we have spoken today, what is the impact of that, and, how can we ensure that, how do we move towards the fertility part of it. So if you could just on a high level, I think, elaborate that. And because I think most of the questions are around that, if they have PCOD, whether they'll be able to conceive, if they're already into infertility, how could they move towards, I'm extremely sorry. I just want to excuse you. There is a question I'm looking in the chat box of Yeah. Bhavya. She's asking that is it that in PCOD dairy products should be avoided, and if so, is it for everyone? So I would like to. I think we skipped that slide in which it was mentioned that natural treatment for PCOS and PCOD. So no, it is not required. In fact, doctors suggest that you should take fresh yogurt, paneer, and these all are dairy products only, and you should include these all stuff in your diet. So this I think we missed this question, so that's why I'm just
Right. And I think one question from Sapna is, I have got miscarriage in the month of May, and after that I am consulting a doctor to get pregnant. They have given few follicle acid and vitamin tablets. So I think she wants to ask if that is okay. Follicle as well as progesterone tablets are also given in the first 3 months of the pregnancy. Right. So I think Progesterone, folic acid, and multivitamins. Yeah, it is perfectly nice. yeah, I I think think Dr. somebody is Tanvi is asking, can we share any session for yoga? So, Dr. Snehal or Dr. Nikita, if you conduct, your classes or anything, you can share that here as well. Like Yeah. if you're taking any sessions on yoga, and definitely Naturefit will conduct the next yoga session. I think for specifically for the asanas that we have, seen today. Let's do it with most of the people who are here. So I think I think we are almost short up time for almost 15 minutes. I would like to thank everybody who has joined and taken out time today, and I would specially like to thank Dr. Nikita and Dr. Snehal for wonderful session. Even though I am involved in Naturefit, I learned to go get so many new things today, and especially the part where how the mind releases chemicals which actually trigger everything in our body was very, very interesting. So I think thank you so much. And we all Naturefit, we are reachable. Yeah, I think even Dr. Snehal has shared her details. Dr. Nikita, you may also want to share your details, and Yeah. both the doctors are available on the Naturefit platform as well. So you may just go and search, and you can take the first consultation as well from the doctors. And I think we will be conducting more and more such webinars. So we will keep you all informed about that. And thank you so much. And I'm sorry if some questions have not been able to be not been able to take because either paucity of time or due to some technical glitch. I think we will be much more prepared and we'll have more time next time. So thank you so much. Thank you all beautiful ladies, and wish you a happy Women's Day in advance. And I hope let nature heal all. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Avni. Thank you, Thank everyone. you. Bye. Thank you, Naturefit. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care.